Hello everyone, welcome back to my channel RN ArchiVision. Today is a new video wherein we are going to learn how to use the hatch tool. Hatch tool में काफ़ी सारे settings होते हैं, काफ़ी सारे learnings होते हैं उसमें, and hatch tool use करना is one of the most basic and the most important tool in any flow plans. ठीक है, तो हम आज देखते हैं how to use the hatch tool. So let's get started with our video. So for today, what I'm going to do is I'm going to create a rectangle using the keyword REC and going to create a rectangle over here. And इस rectangle को मुझे hatch करना है, ठीक है? So what I'm going to do is I have like two ways of approaching the hatch tool. First thing is यहाँ से normal यहाँ से you can directly use the hatch tool. Click करिए and यहाँ सारे options आपके पास open हो जाएंगे. If not this, you can use the keyword hatch, ठीक है? HA use करिए followed by the space bar, and you have all of these options that opens up near you. Or इसमें when you just click this hatch, all the hatches are near you. काफ़ी सारे options है आपके पास यहाँ पर. You can actually go with the most basic ones like these ones at the top. Proceeding further with the bricks. Okay, bricks texture दिखाना है आपको walls के लिए, तो you can use this. और concrete texture दिखाना है तो ये भी use कर सकते हैं आप. Okay, and then concrete का है यहाँ पर, और roof का दिखाना है. Anything of that sort. Sand दिखाना है तो ये use कर सकते हैं. All of these that you have over here are present. Okay, and normally भी आप basic hatch use कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए. Like if you have created a mat, मैट के लिए आपको कुछ ना कुछ टेक्सचर तो देना पड़ेगा, राइट? सो उसके लिए you can either go with like the dash lines, okay, just to show कि this is like a mat, okay, or cross signs, okay, anything of that sort. और gravel है यहाँ पर, honey है, grass भी है हमारे पास, ठीक है? So there are like multiple options that you have under this hatch tool. So अभी फिलहाल के लिए what I'm going to do is I'm going to use the most basic one. Like for example, I will use this particular hatch tool, ठीक है? So you can also go directly with the solid as well, ठीक है? तो अब मैं पहले ये ANSI 32 use करके दिखाऊंगी, ठीक है? I'm going to select this and कहीं पर भी, okay, when you just place it anywhere which is like enclosed object, okay, वहीं पर ही hatch इस्तेमाल कर सकते हैं आप. So what I'm going to do is I'm going to place over here. This is an enclosed place. So I'm going to just click over it and hatch आपका आ गया है. But as you can see, जो pattern मैंने select किया था वो pattern तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, right? So इसमें what is the matter is, यहाँ पर आप देख सकते हो my size over here, यहाँ पर it's 1, ठीक है? 1 is a pretty small size, तो हम यहाँ पर size increase करने की कोशिश करते हैं. So I'll just start with 100, ठीक है? And see how would that look like, yeah? See, you can see the texture, the hatch आपने जो use किया है वो आपको नजर आना start हो गया, ठीक है? So that's how you actually hatch this particular area. And अगर if you want, you can actually even go with the different colors over here. जो color आपको इस्तेमाल करना है, like for walls, when you just give the hatch texture, उसमें आप different colors use इस्तेमाल करते हैं, like especially you go with cyan or the gray colors over here, okay, वो इस्तेमाल करते हैं just to show the texture. इस तरह से आप यहाँ पर you can actually do it this way, ठीक है? Now I'm going to draw another rectangle quickly. और अभी मैं यहाँ पर solid texture use करूँगी, ठीक है? Solid के लिए I'm going to select this, और यहाँ पर भी आप select कर सकते हैं तो pick point कर सकते हैं. So first I'm going to use the select boundary objects, ठीक है? आप किसी भी चीज़ की boundary को select करके you can just put the hatch, or you can actually pick any point over it, ठीक है? So मैं यहाँ पर select करूँगी boundary, okay, like this one, and it got the hatch too, ठीक है? अभी यहाँ पर what I'm going to do is I'm going to select this hatch and going to change the color just to show you all. So this looks a little too bright, okay? इस तरह का bright color flow plans में अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है. So what you need to do it, you need to just fade the color a little. So what I'm going to do is you're going to make it a little transparent. तो इसमें what I'm going to do is I am going to enter 50, और अब देखिए आप, see this looks a little fade out, right? या आप और भी कम कर सकते हो. Maybe I would go with like 65, okay? And let's see that. See, काफी ज़्यादा faded color दिख रहा है, right? So this is something very important, like few settings of it. It's something very important that you must know, ठीक है? So इस तरह से you can actually do it. Now for example, मुझे बाद में याद आया कि अरे नहीं, मुझे ये hatch tool इस पे नहीं चाहिए था. I wanted the very similar like this red.
तो आपको दोबारा डिलीट करके दोबारा से करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. व्हाट यू कैन सिंपली डू इज़ यू कैन सेलेक्ट दिस हैच. यहाँ पर मैच प्रॉपर्टीज है, मैच करिए एंड सेलेक्ट दिस. ठीक है, इट जस्ट कम्स अप द वे इट वांट्स. ठीक है, ठीक है. तो इफ़ यू वांट टू मेक चेंजेस तो आपको इसको चेंज करना है, मैच दिस प्रॉपर्टी विद दिस वन एंड यू गेट दिस राइट अवे. ठीक है, तो इस तरह से यू कैन एक्चुअली चेंज इट एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो इस तरह से यू कैन एक्चुअली क्विकली एंड इजीली चेंज दिस पोर्शन. ठीक है, नाउ अभी यहाँ पर आई नीड टू मेक श्योर कि आई वांट टू रिमूव दिस. ओके, रिमूव तो मैं नॉर्मली अगर मैं इस तरह क्लिक करूँगी तो ये रिमूव तो हो जाएगा, बट व्हाट इफ, ओके, I'll just show you again. ठीक है, मैं ये दोनों डिलीट कर देती हूँ एंड अगेन ऑन हैश टूल, और मैं सॉलिड कलर यूज़ करती हूँ. ओके, एंड आई एम गोना यूज़ द कलर लिटिल लाइटर, मे बी लाइक अ ग्रे कलर. ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी भी आई वुड कीप इट टू बी 60. ओके, एंड या आई एम सेलेक्टिंग दिस टू बॉक्स. ठीक है, अभी व्हेन यू जस्ट सी दीज टू हैच, ठीक है, when I'm selecting it, these both are selected together. क्यों? Because I have made the hatch together. ठीक है, एक कॉमन यूज करते हुए मैंने ये हैचेस क्रिएट किए हैं. ठीक है, एंड नाउ आई नीड टू मेक श्योर कि मुझे हैच यही रेक्टेंगल के लिए चाहिए और ये रेक्टेंगल के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए. सो व्हाट आर यू गोना डू? सो आप क्या करेंगे, आप ये डिलीट करके दोबारा से नहीं करोगे. ओके, दैट इज समथिंग व्हिच इज गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो उसमें आप क्या करोगे, यू आर गोना यूज द पॉलीलाइन. ठीक है, which is by using PL followed by the space bar, and you're gonna make an outline of the portion that you want to remove. ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये rectangle का remove करना है, so I'm gonna make an outline of this particular rectangle. ठीक है, बन गया है, and now I'm gonna select this rectangle, और यहाँ पर do you see MISC? ठीक है, ये portion में I have this closed as no, so I'm gonna change this to be yes. ठीक है, और फिर उसके बाद I'm gonna use the keyword trim. TR followed by the space bar, and then ये hatch मुझे निकालना है, तो I'm gonna remove this hatch. ठीक है, and then gonna delete this particular rectangle. ठीक है, ये हो गया है हमारा hatch clear up. अभी यहाँ पर ये एक ही hatch है which we could use, and यहाँ पर ये rectangle में hatch नहीं है. And when you select this rectangle, okay, यहाँ पर you can just delete it because उस पे हमने दोबारा से रेक्टेंगल बनाया था, तो वो रेक्टेंगल हमें निकालना होगा. सो नाउ व्हेन यू जस्ट सेलेक्टेड, देयर इज जस्ट वन रेक्टेंगल व्हिच इज बीइंग सेलेक्टेड. ठीक है, ठीक है, सो दैट इज हाउ यू एक्चुअली make changes in your hatch tool. So that was something very easy, isn't it? So this is how you actually use your hatch work, okay, on your floor plans. और अनदर वे आप इसमें हैच रिमूव करना है, तो दैट वाज लाइक one of the ways I have shown. The second way what I can do over here in order to remove hatch from one rectangle and have another hatch on the other rectangle, मुझे ये rectangle का hatch बिल्कुल चाहिए, ये rectangle पे मुझे remove करना है. So the easy way how we can do is that यहाँ पर आपके पास ऊपर option है of remove. ठीक है, so ये remove का option हम use करते हैं. I'm going to click on the outline or the outline of this particular rectangle, okay, and followed by the space bar. ठीक है, and as you can see ये hatch remove हो गया है ये particular rectangle से, and we have hatch only on this rectangle. I hope you have loved watching this video. If you have any questions regarding this or anything you want to clear out, you can definitely put the questions in the comment section below. I would definitely love to answer all of your questions. Thank you so much for watching my video. If you haven't taken a look over other videos on my channel, do take a look over it and do share it with your friends as well. Do like my videos, share it with your friends, subscribe my channel, and inshallah I will be back with my next video with the most interesting and the most informative video for you all. Till then, take care and bye bye.